स्टॉक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं और अगर आप भी इसी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं कि किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया जाए इस वॉलेटाइल मार्केट में, तो आप सही जगह पर आए। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग बिजनेस टुडे टेलीविजन एंड स्वागत है आप सभी का बिजनेस टुडे बाजार में भी। इस खास शो पर हम चर्चा करने वाले हैं होली की भी और साथ ही साथ होली के साथ अपना रंगारंग पोर्टफोलियो बनाने की भी। जी हाँ, दिस इज द होली स्पेशल एडिशन वेयर आई विल बी जॉइंड बाय टू स्पेशल गेस्ट, टेक्निकल guest as well as a fundamental expert to help you identify a set of 9 stocks that will not only add brightness to your portfolio but will also promise a profitable return in the long run. Joining in on this very special edition with me is Mr. Chandan Taparia, Vice President Derivatives at Motilal Oswal Financial Services. Also with us is Mr. G. Chokalingam, Founder and MD, Economics Research. Welcome to both of you, and here's wishing you all the brightness of Holi. Mr. Chokalingam, very happy and bright and vibrant Holi to you, and may this festival of Holi add more joy to your lives, to your home and to your team members. And Mr. Chandan Taparia as well, may this continue to bring in all the more smiles to your clients' portfolios as well. So it's going to be a bright Holi is what we're expecting. Let's kickstart our discussion. We're going to be promising you, all our viewers, that by the end of this discussion, you will have 9 well-diversified stocks, each from various sectors, and you will be able to create a solid portfolio for yourself on this Holi. So let's get started. Mr. Chokalingam, tell us, what is your first pick for Holi this season? Yeah, thank you very much for your greetings. I wish you a happy Holi to you and your team. I have 5 stocks to place it here today on the eve of Holi. These are Bombay Burma Trading Corporation, Jio Financial Services, Karnataka Bank, HDFC Life, and Indoco Remedies. Okay. Out of these 5 stocks, I would like to mention that we personally invested in Bombay Burma and Karnataka Bank. Other 3 stocks we do not own. Okay. And official coverage on them. And if you want me to explain, I can explain. So we can start off with the first one, Bombay Burma, that you've talked about. Tell us the rationale. Why have you picked out this stock, and what is the kind of upside potential that you see going forward? If an investor were to invest in Bombay Burma today, what is the strategy that one should be following? First of all, this is suitable for those who can take a little risk in small and mid cap, because it's a small mid cap stock, and also it's a holding company. As I said, we personally invested into company as well, through my family member as well. Now, I may be wrong, but I have extraordinary confidence in this stock. This is more than 100-year-old stock. It's a holding company of Britannia. It has a 50.5% stake in Britannia. And my target price is conservatively 2,200. That's a very conservative, because it has a 80% discount to value of investments in Britannia. Yes, it is more than 100-year-old and listed for decades. So why now? What are the triggers? So I consider 3-4 short-term triggers which should help the company to reduce the holding discount, because most other holding companies, they have a discount of around 50%. Some of them have even 10-20% discount, but this company has a discount of 80%. Trigger one, Wallace Brothers, who were one of the original promoters of the company more than 100 years ago, they were classified as a public shareholder. Now, in December quarter, they have become part of promoters. So, this British family becoming part of promoter group gives me confidence on the governance issue. And second, this company has a 44% stake in Bombay Dyeing, and Bombay Dyeing sold land worth 5,000 crore, unlocked a lot of money, reduced the debt, and helped Bombay Burma to improve its consolidated performance. And third, the Goya. They lost a lot of money in Goya, but now Bombay Burma has completely written off all the exposure to Goya completely in December quarter, and also prior to that. And the management also mentioned that they are not going to make an attempt to take over again. So that's a positive for the company, because there is not likely to be any further loss due to the Goya. And fourth, the consolidated profit, because of improved performance of Bombay Dyeing and also no more losses from Goya, in December quarter, the consolidated profit went up by 189% for Bombay Burma.
to 457 crore compared to 158 crore last year. So considering all this, I believe that this can be a wealth creator, but again, investors should consider only with some risk since it is being a small and mid cap stock. Sure. So high risk appetite investors should be investing in it. You have also shared with us 3 key reasons why you are bullish. What is the upside that one can expect? Conservatively 2200, even at 2200, the discount will be only around 70%. By any chance or through luck or any development, unexpected development, if good things happen, the discount can go down to even 50%. With 50% discount, then the stock is worth even 5,000. But I am not giving that kind of projection. Conservatively, I am giving 2200. 3,000 is possible in the 1 to 2 year time frame. ओके तो 2200 का तो टारगेट यहाँ पर आपको बीबीटीसी में मिल गया है और उससे ऊपर भी जा सकता है, ये कॉन्फिडेंस अभी मिस्टर चोकलिंगम की तरफ से है। चंदन जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आप किस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इस होली में दाव लगाने वाले हैं। जैसे अभी मिस्टर चोकलिंगम ने बताया, इतनी साल पुरानी कंपनी है जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिली है, कितने समय से लिस्टेड है और होल्डिंग कंपनी है कई तरीके। तो क्या आपने भी ऐसी कोई हिस्टोरिकल स्टॉक उठाया है जो कि सबके पसंदीदा स्टॉक लिस्ट में से होता है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपको, आपके पूरे टीम और सारे व्यूअर्स हैं उनको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस कलरफुल फेस्टिवल एड कलर्स टू योर पोर्टफोलियो। और जो आपने 9 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, 9 इज एन ऑस्पिशियस नंबर एंड आई एम श्योर ऑल दीज 9 stocks will make your portfolio colorful to enjoy the festival. So now talking about the stocks, पहला ट्रेड रहेगा मारुति पे। मारुति वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है। इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में 15-16% की बढ़त यहाँ पे देखने को मिली। पिछले 5-6 दिनों से जब बाजार गिर रहा है उसके बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे मोमेंटम है और एक नई रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग, इट इज मेकिंग हाई टॉप्स, हाई बॉटम ऑन द वीकली एंड द डेली चार्ट. It has given a consolidation breakout and all set for next leg of rally. So 11,400 का एक मेजर सपोर्ट है, 12,500 और 13,000 तक यहाँ पे टारगेट बन रहा है. सो मारुति पहला ट्रेड रहेगा. हमारा ऐसा मानना है कि भारत में कोई भी फेस्टिवल हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बिना तो फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो पाता है. So I believe this Holi, Maruti will take you to the long drive and it may continue its momentum to the top gear. So recommending Maruti for an upside move to us 12,500 to 13,000 zone, looking at the data, technical setup and relative strength compared to the movement in entire auto segment. क्या बात है. ऑटो सेक्टर का लीडर, देश की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी, जो कि आज भी अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर ट्रेड कर रही है. 11,960 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और आज ही के दिन में हमने 3-3.5% तक का मूव ऑलरेडी स्टॉक में देख लिया है और यहाँ पर भी ये पारी रुकने नहीं वाली है. जैसे कि चंदन जी ने बताया कि एक लॉन्ग ड्राइव पर आपका पोर्टफोलियो लेकर जाएगा. टॉप गियर में ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को लेकर जाने में काफ़ी सक्षम है. 12,500 से लेकर 13,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं. तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि अरे अब तो बहुत महंगा हो गया, तो और भी हायर लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, तो तैयारी कर लीजिए. मारुति सुजुकी के ऊपर दाव लगाना है तो इस होली पर आप लगा सकते हैं. चलिए, द नेक्स्ट स्टॉक, मिस्टर चोकलिंगम, फ्रॉम योर पोर्टफोलियो, व्हिच वन आर यू गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एंड हाउ, व्हाट इज योर रैशनल फॉर सिलेक्टिंग दैट स्टॉक? Yeah, the second stock is Karnataka Bank. Here also we have invested personally through company as well as in personal name. I like it a lot. This stock I have been tracking from 1992. Okay. Yeah, so I have recommended many times in the past. It's amazing. Though I have been tracking it from 1992, the kind of improvement it has made in the last 2-3 years is unbelievable. But the stock is trading at just 0.6 times adjusted book value, price to adjusted book value, which is the cheapest among all private sector banks. Or even if you take many microfinance turned banks, it's the cheapest valuation. I firmly believe that it deserves at least one time book value, adjusted book value, that too, which is about 337 for next year. So that is my target price in the short to medium term. And the triggers are plenty. This is the 100th year for the bank. Okay. February they celebrated 100th year, and this is the only old private sector bank. Still, the face value is 10 rupee. Most of the old private sector banks have a face value of 1 or 2. I believe, the bank may reward the investors through bonus or split.
And of course, just bonus and split per se doesn't create wealth. It has to be backed up by the growth in the business and profits. That is where I like Karnataka Bank a lot. The profit has, it was around 348 crore in 2013. In the current year, it is around close to 1300 crore. So it has come a long way in building the businesses, building the profits. And not only that, the bank used to have a commanding, a significant discount peers because its net NPA used to be very high. Now that is where I like this bank. Its net NPA has come down to 1.55% in the December quarter. It used to be 3.18% in FY21. So on the digital banking front, the bank has made a tremendous progress. Whether you talk about the low-cost deposits or capital adequacy ratio or provision coverage, the bank has done a phenomenal improvement. And lastly, the most important, the promoter stake is zero. The bank has survived for 100 years. In 100 years, we heard from the bank that it has never made losses. And out of 100 years, only 3 years it skipped the dividend. And not only that, though the promoter stake is zero, the recent years, the institutional holding, including the corporate FII, FPI, and mutual fund, it has now become 41%. So I firmly believe the institutional shareholding in the bank can go further substantially because recently, a few weeks back, ICICI Lombard has taken the stake in the bank by investing about 100 crore at a price of 265. The current price is substantial discount to the recent placement. That also gives me a lot of confidence. So therefore, I like a lot Karnataka Bank. Okay, Karnataka Bank 337 is the long-term target for it. Again, a company which has a long-standing history. The promoter holding may be zero, but then there are several triggers that Mr. Chockalingam is betting big on, and it can continue to give you handsome returns. Right now, trading with 2.4% uptick at around 230 rupees, but for sure you can look at 100 rupees plus kind of a profit in the long term on this stock is what Mr. Chockalingam is betting on. चंदन जी, आप बताइए कि अब अगला स्टॉक आपके पिटारे से कौन सा निकलेगा? होली में अब कौन सा रंग अब आप डालने वाले हैं इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, होली की बात करते हैं तो आई थिंक खाना पीना तो सबसे पहले होता है, बिकॉज इट्स सेड दैट होली है तो दावत तो बनना चाहिए. बिल्कुल. इंडियन आर नोन फॉर पार्टीज, एंड आई थिंक पार्टी की बात करें सो अगेन इट मे बी द हाउस पार्टी or it may be anything. So I'm recommending to go long on Zomato. One of the strongest counter. I'm sure even you can order something and invest in the counter as well. काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है. In fact, the stock is up by around 28-30% in the last couple of months. And पिछले 3-4 वीक में हल्के से प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है. In fact, I remember in last 2 festival as well, we recommended to buy on Zomato and stock has given 100% return as well. So we believe that this festival as well, this Zomato will do some positive stance. It will deliver happiness to your home and to portfolio as well. So recommending to buy with support of 153. ऊपर में लगभग 174 तक के टारगेट यहाँ पर बनने चाहिए. तो Zomato हमारा दूसरा पिक रहेगा इस होली को और कलरफुल बनाने के लिए. Zomato तो डेफिनेटली खाना पीना तो चलता ही है और Zomato से बहुत लोग ऑर्डर करेंगे. और चंदन जी, आप तो और ज़्यादा करेंगे क्योंकि आज ही अब कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो अब वेजिटेरियन फ्लीट भी लाने वाले हैं, और क्योंकि आप वेजिटेरियन भी हैं तो आप तो इससे और ज़्यादा ऑर्डर करने वाले हैं. क्यों? बिल्कुल सही है. आई थिंक वो एक लीडर भी है और कहीं ना कहीं कंजम्पशंस पे फोकस रहेगा. और होली पे कंजम्पशंस में यही खाना पीना होता है और सेटअप काफी अच्छा है. और हमारा मानना है कि इस तरह की ई-कॉमर्स कंपनी में अच्छा खासा रुझान मार्केट में मिलेगा. और अच्छी बात यह है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है, सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप जो गिरे हैं उसमें से जिसमें रिकवरी फास्ट है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे स्ट्रेंथ है. और जोमेटो भी उसी एक श्रेणी में आ रहा है जो थीम के साथ भी बैठ रहा है, जहां पे ट्रिगर भी है और जहां पे ओवरऑल मोमेंटम भी बन रहा है. चलिए, तो होली में अगर आपको स्वादिष्ट खाने का अगर रंग डालना है अपने पोर्टफोलियो में तो Zomato को शामिल कर लीजिए 174 के टारगेट्स के लिए. और कंपनी सही दिशा में है. लगातार चंदन जी की रिकमेंडेशन पिछले कई समय से चल रही है, जहां से 100% तक का रिटर्न ऑलरेडी उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दिलवाया है. अभी भी भरोसा है कि यहाँ से भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिटर्न आपको Zomato पर देखने को मिल सकता है. ऑलराइट, मिस्टर चोकलिंगम, व्हाट अबाउट द थर्ड स्टॉक दैट यू विल बी रिकमेंडिंग फॉर आवर व्यूअर्स ऑन होली स्पेशल एडिशन नाउ? Yeah, along with the small and mid cap, I also want to add a couple of large cap stocks. Okay. Jio Financial Services.
Though it's a large cap, short to medium term target is 420 rupees. But in 5 to 7 years, I expect the stock to go up anywhere from 700 to 1000. Of course, I'm not joking at all. I may be wrong absolutely, but this is my firm conviction. And I do not own the stock directly or indirectly or through company or family members or relatives. But I am extremely bullish on the stock. Why? All of us know the Reliance, being an oil and gas company, today it has already emerged as a mini economy, diversified into many sectors, and that too with a great success. Now, this oil and gas company has already become a leader in retail. It has become a leader in telecom. Now it has become a leader in digital. But now Jio Financial is a new avatar. I believe Jio Finance also will become a leader because consistently the Reliance has proven its capability in building a leadership in whichever new business they are diversified. Now, not only that, even on the basis of fundamentals, I like Jio Financial a lot because, very smartly, this company has inherited more than 1 lakh crore worth of Reliance shares. And I believe over the years, 3 to 7 years, those shares would be helpful to the company to build its network. And generally, we analysts assume, that 10 times would be the lending as compared to the network. So in 5 to 7 years, it should be able to even build a book of even 10 lakh crore using this Reliance share. This is pure assumption. It's not a forecast. Even otherwise, the book value is around 182 rupees. Now the stock trades at 1.9 times price to book value. We have seen many small finance companies trading at even 3 times, 4 times. Leaders are trading at even 6 to 7 times. Now, if I assume just around 3 times in next 4 to 5 years or 7 years, and with inherent growth the company can show, I think the stock can go to even 700 to 1000 in 5 to 7 years. That's my long-term target, but to be very conservative, I am giving right now only 420 rupee target for Jio Financial Services. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 3 महीनों में आपको 40% से भी ज्यादा का रिटर्न दिखाता हुआ दिखा और अभी भी कन्विक्शन काफी स्ट्रांग है। अगर आप बहुत लंबे समय 5 से 7 साल तक के लिए वेट करना चाहते हैं स्टॉक पर तो काफी बुलिश व्यू है चोकलिंगम सर का। यहाँ पर वो मानते हैं कि 1000 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए 420 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक के लिए टारगेट लेकर आप होली के अवसर पर यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और डिप्स भी देखने को मिल रहे हैं तो अच्छा मौका है आपके लिए यहाँ पर निवेश का। चंदन जी, आप बताइए, अब मारुति हो गया यानी कि ऑटो स्टॉक्स और जोमैटो भी आपकी तरफ से हो गया, यानी कि अच्छा तड़का भी आपने लगा दिया है होली के अच्छे रंगारंग पोर्टफोलियो में। अब नया स्टॉक कौन सा आएगा आपके पोर्टफोलियो में? बिल्कुल, होली और त्योहार की बात करें तो कंजम्पशन अगेन फोकस में रहता है और जोमेटो पे खाना ऑर्डर कर सकते हो, बट घर संभालने के लिए बाकी चीजें पे तो ध्यान रखनी पड़ती है। बिल्कुल, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ होस्ट पार्टी, मेकिंग थिंग्स बेटर एट होम। सो मेरी तरफ से थर्ड नेम रहेगा डीमार्ट। ओके। डीमार्ट इज among the popular retail chain in India, really known for its affordable price and variety of products. So काफी अच्छा सेटअप है। टेक्निकली देखें तो 14-15 वीक का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। मैं ईयरली चार्ट पे देख रहा हूँ 3 साल का नीरो रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। स्टॉक 5-7% चलता है तो 40-50% के मूव के लिए भी रेडी बन जाएगा। बट एज ऑफ नाउ जिस हिसाब से सेटअप है, नीचे के लेवल से रिकवरी है। आई एम एक्सपेक्टिंग ए रैली टुवर्ड्स 44-44। सो 3750 के सपोर्ट से डिमांड पे खरीदारी की सलाह होगी। 4444 तक के टारगेट डिमांड में बनने चाहिए और हमारा ऐसा मानना है कि इस होली में डिमांड का कंजम्पशन आपके पोर्टफोलियो के लिए लाभदायक रहेगा। तो मारुति जोमेटो के बाद तीसरा पिक डिमांड पे रहेगा, जहां पे हमारा मानना है 10-15% की रैली बननी चाहिए। ठीक है, 10 से 15% तक के अपसाइड के लिए डीमार्ट में निवेश कर सकते हैं। 4444 ये एक मैजिक नंबर है, इसको आप अपने टारगेट के हिसाब से रख सकते हैं। डीमार्ट में भी निवेश कर सकते हैं। वैल्यू रिटेन सेल्स में अगर आपको निवेश करना है तो डीमार्ट उसमें अव्वल नंबर पर पसंदीदा स्टॉक चंदन जी की तरफ से। अगर होली के पोर्टफोलियो को आपको तैयार करना है तो कंजम्पशन स्पेस को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये स्टॉक को चुना है। प्लस टेक्निकली ये स्टॉक आपको 10 से 15% तक का अपसाइड दिखा सकता है। लेट्स गो अक्रॉस टू मिस्टर चोकलिंगम नाउ। Mr. Choklingam, what will be the next stock that you will advise? You've already suggested finance names, banking names from your portfolio. What is the next one that you will be talking about? Yeah, I would suggest Indoco Remedies. It's a small cap pharmaceutical company. I like a lot because I've been tracking this management for more than 10 years.
I believe the management is good, balance sheet is reasonably good. And what I liked is that they have a domestic formulation businesses and mostly branded sales. Now, if you look at the companies like JB Chemical, Aries Pharma, they trade at around times enterprise value to branded sales. Now, if I assume even 4 times to branded sales of Indoco Remedies, and for export business just about 1 time. Actually, the export business of Unichem Pharma got 1.7 times. But conservatively, even if you assume 1 time for export sale of Indoco Remedies and 4 times for the domestic branded business of Indoco Remedies, the target price could be around 440. And being a pharmaceutical company with a decent balance sheet with the domestic business, I believe it is one of the relatively safest small and mid-cap stock at current time. Okay, Indoco Remedies, a strong pharma player, a small cap pharma play that you can look at. Currently about 0.6% higher at 333, can actually go up to 440 odd levels. That's the fourth pick that has been suggested by Mr. Chokalingam. All right, let's go across to Chandan ji for your last pick for the Holi portfolio that you have defined. कौन सा ये स्टॉक होगा, किस क्षेत्र से आपने चुना है और किस रैशनल से अगला स्टॉक बताएंगे? बिल्कुल 3 स्टॉक जो बात की हमने पूरा का पूरा कंजम्पशन पे फोकस किया है, मारुति, जोमेटो एंड डीमार्ट। और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और जो चौथा स्टॉक्स है, हमारा ऐसा मानना है कि हमारे पोर्टफोलियो के यदि कलर निखरेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था के कलर भी निखरेंगे। और जिस हिसाब से ग्रोथ बन रहा है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग को फॉरगेट नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि क्यूमिंस पे फोकस करना चाहिए। क्यूमिंस इंडिया की बात करें तो काफी अच्छा सेटअप है, लगातार 5 सालों से यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले लगभग 20-25 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए काउंटर तैयार है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत है और कोई भी हल्के से डिक्लाइन पे यहाँ पे एक रिनाउंड बाइंग आ रहा है। टेक्निकली बात करें तो की मूविंग एवरेजेस को ये काउंटर होल्ड कर रहा है, तो क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2650 2650 के सपोर्ट है, 2950 से 3000 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। और इस होली हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि देश भी अर्थव्यवस्था में भी चार चांद लगे, कलर लगे। तो कंजम्पशन के साथ देश की इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स कंपनीज पे भी फोकस होना चाहिए। चलिए, देश की कैपिटल गुड्स कंपनीज में भी फोकस होना चाहिए। क्यूमिंस आखिरी स्टॉक पिक जो कि चंदन जी की तरफ से आया है, 3000 रुपए तक के टारगेट के लिए आप यहां निवेश कर सकते हैं। पिछले 5 साल में लगातार तेजी और 270% तक का मूव आपको देखने को मिला है। पिछले 20-25 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है ये स्टॉक। यहां पर अगर आप निवेश करेंगे तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी अच्छी खासी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते हैं हम आखिरी स्टॉक जो हम आज होली स्पेशल एडिशन में डिस्कस करने वाले हैं। 8 स्टॉक्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। अगर आप कोई भी स्टॉक मिस आउट कर चुके हैं तो मैं आपके लिए ये जरूर एक बार रिकैप करूंगी, लेकिन आखिरी स्टॉक पहले जान लेते हैं मिस्टर चोकलिंगम से। व्हिच इज द लास्ट स्टॉक मिस्टर चोकलिंगम दैट यू विल बी रेकमेंडिंग फॉर दिस होली? HDFC Life, I would like to recommend one large cap, another large cap in this market condition. I believe firmly that all conservative investors should consider HDFC Life. First of all, the stock has already corrected from the peak almost around more than 20%. And secondly, the company is able to grow its insurance new premium business quite consistently at double digit. And this life insurance business will continue to grow in double digit in the years to come. So this is one of the best place to capture that growth. And today it is very difficult to find a lot of sectors in the large cap space which promises you, double digit growth. And this is one stock. And third most important fact is that the merger of HDFC Limited with the HDFC Bank also augurs well for this company, because now the HDFC customers also can be approached by HDFC Bank staff to onboard the clients for the insurance business. So I would strongly recommend for conservative investors HDFC Life. HDFC Life for a target of 720 rupees is something that you can go for. And of course, life insurance is a space that has been constantly garnering all the attention from the government, from the citizens, as in when they are realizing the importance of life insurance, these players are going to be extremely benefited. And among those, HDFC Life has been chosen by Mr. Chokalingam. Let me now recap for you the 9 stocks that we have discussed for your Holi portfolio, a well-diversified, colorful portfolio and a well
balanced portfolio, and that is what you can really look at creating. The first stock that we discussed from Mr. Chokalingam was BBTC. Here you can expect a target of 2200 in the short to medium term, but thereafter there is a strong conviction that the stock has the potential to give you much higher returns from those levels as well. The second stock was discussed by Mr. Chandan Taparia. He bet big on Maruti, the largest car maker of India. Right now at all-time high levels, all set, and right now itself you can see 12,000 levels being crossed. We were talking about it, and this is an all-time high level, 3.5% higher for Maruti Suzuki. For the first time you're seeing 12,000 levels on Maruti on your screens, and 12,500 is the target price immediately, and then 13,000 would be the next target price that Mr. Chandan Taparia has bet big on. The second stock discussed by Mr. Chokalingam was Karnataka Bank from the banking space, where he believes 337 target could be looked at, and therefore investors can continue to buy Karnataka Bank. After a long haul of consolidation, the stock is well poised to be moved higher over the next couple of years. Zomato is the next one that Mr. Taparia chose for today and for Holi special, where he believes that the company has been constantly innovating, and this is an interesting space to be held on to. Right now at 160, it can go up to 174 rupees, a pure play technical stock that you can really look at betting big on. The third one was mentioned by Mr. Chokalingam from the large cap space as Jio Financial Services. The stock has been in the thick of action. It has been constantly moving up higher. There is further potential, and the stock can even go higher to even about 420 odd levels. The next one we discussed was DMart from Mr. Taparia. Again, the consumption theme was prevalent in his discussion of the stocks that he's betting big on, retail value chain, and here he expects 4444 as the next target that you can look at on this one. The next one was discussed by Mr. Chokalingam, Indoco Remedies, a small cap pharma company where he has been consistently bullish on, and many a times he's mentioned this stock on Business Today television and on Market Today. Even now he believes 440 could be the target that you could be looking at. Cummins India was the next one that Mr. Taparia discussed, and here he believes that 3,000 could be the next target that you could be looking at. And the last one we discussed was for the life insurance space, HDFC Life, where 720 kind of targets could be looked at, that Mr. Chokalingam has talked about. So there you have it, well diversified, 9 stocks. You can take your pick, discuss with your own financial advisor, and think of how do you want to rejig your own portfolio by adding these beautiful colors into your whole portfolio. Many thanks, Mr. Taparia, and many thanks to you, Mr. Chokalingam, for joining us on this very special edition and sharing with us such vibrant ideas that investors can really look at. It's difficult to find out such stocks which are value buys and which are good technically even in this volatile market, but we've been able to manage to put together a 9-stock portfolio for Holi for you, and hope you are able to enjoy all the colors and all the profitable trades that you get into after this discussion.